Hello guys, today our activity is spooning activity. How to hold a spoon and how to use it. It is a gripping activity. जब हम बच्चे को स्पून को सही तरीके से ग्रिप करना सिखाते हैं तो इससे वो पेंसिल को सही तरीके से ग्रिप कर पाता है। तो ये हमारी एक्टिविटी बच्चों के ग्रिपिंग के लिए बहुत नेसेसरी है। And education is not merely learning of various subjects and increasing your quantum of knowledge. Knowledge is necessary but not sufficient. It is important for a child to grow into a well developed personality who knows how to live a healthy life in every aspects of human existence. Education has to be an effort to help the child live his life as he is mean to and to actualized his inner potential. एक तो हमारे लिए ये बहुत समझना ज़रूरी है कि बच्चे को हमने एक हद तक आज़ादी देनी है इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिकॉज डॉक्टर मॉन्टेसोरीज एक्सपेरिमेंट्स वर सेंटर्ड ऑन चाइल्ड. शी लुक्ड फॉर नेचर्स पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट and the needs of the growing child. Her system of education is therefore adopted to the child's interest, and it is very important for our children to become a great personality.